My lovely students, welcome to Mathological. This is the 16th session on permutations and combinations, and let us start this session. The first question, find the maximum number of distinct points of intersection of 6 circles. So if we've been given 6 circles randomly, so what could be maximum number of distinct points of intersection on those 6 circles? So let us say we start with a small example. Let us say we have 2 circles. So कितने cases बन सकते हैं? If you have 2 circles, we might have those 2 circles apart from each other. ठीक है, सर्कल का फील नहीं आ रहा होगा बट समझ लेना कि दीज टू आर सर्कल्स. सो इफ दीज आर द टू सर्कल्स देन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0. और लेट अस से इफ सर्कल्स आर concentric, which means they are sharing the center and one circle is inside the other, so definitely even in that case points of intersection will be 0. So these will be two cases when points of intersection are 0. हमें चाहिए क्या? maximum number of points of intersection. So one case could be when the two circles are touching each other. If they are touching each other, points of intersection will be exactly 1. And last and final case, when both are intersecting, and in that case points of intersection will be equal to 2. So 2 is the maximum value of points of intersection in case of 2 circles. But question में हमें given है 6 circles, so we have to identify maximum number of points of intersection. Maximum value हमें तब मिलेगा when all the pairs of circles, ठीक है, यानी कि जब हम 2 circles select करेंगे 6 में से, so all pairs of circles are intersecting exactly at 2 points. So that will be maximum value. So maximum value will be equal to all the pairs of circles, which will be 6c2 multiplied by 2 in each case. So 6c2 into 2, that will be equal to 30. 30 points of intersection will be there in case of 6 circles. Is that clear? Next question. Find maximum number of points of intersection possible among 7 straight lines and 5 circles. No other condition is given. हमें identify करना है maximum number of points of intersection among 7 straight lines and 5 circles. So यहाँ पे straight lines भी हैं और circles भी हैं. In case of straight lines, if they are parallel, then there will be 0 points of intersection. But if they are intersecting, in that case there will be exactly 1. So 1 is the maximum value in case of 2 straight lines. And if we have 2 circles, then maximum number of points of intersection are equal to 2. But if we have 1 straight line and 1 circle, तब कितने number of intersection points हो सकते हैं? If the line is not touching circle whatsoever, in that case points of intersection हो जाएंगे 0. Or second case could be when the line is tangent to the circle. So if line is tangent, in that case there will be exactly 1 point of intersection. Or otherwise, if line is crossing the circle and intersecting at 2 points, in which case this line is called secant. If it is cutting the circle, circumference of the circle at 2 points, then that is called secant, because part of it is chord, and this line chord extended is the secant is basically a extended chord. So extended chord is a secant which intersects the circle at 2 exact points, and this is the maximum value in case when there is a circle and one straight line. अब इस क्वेश्चन में गिवन 7 straight lines and 5 circles. So हमारे पास 3 cases होंगे. One case will be intersection points made by 2 straight lines. Second case will be intersection points made by 2 circles, and third case will be when a circle is intersecting a straight line. 3 cases will be there. First case, when line and line are intersecting together. So how many maximum intersection points could be there? In 7c2 ways, we can select pairs of lines, and in each case maximum intersection points can be equal to 1. So 7c2 into 1, that is first scenario, plus second case is circle circle. So 5c2 will be number of pairs, and in each case there will be 2 intersection points maximum, plus third case will be line and circle. One line and one circle, so we'll be selecting one circle and one line. So in 7c1 ways we can select a line, and in 5c1 ways we can select a circle and 2 intersection points in all the pairs maximum value. So 7c2 is 21 plus 20 plus 35 into 2, 70. So this is 70 plus 41, 111 is maximum value of the intersection points in such a case. Is that clear? ठीक है, तो maximum value हमारा आ जाएगा 111. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next one, find maximum number of points of intersection possible among 7 straight lines and 5 circles if exactly 3 straight lines are parallel and exactly 2 circles are concentric. यहाँ पे एक और additional condition mention हो गया
that 7 straight lines are there and 5 circles are there, but there are exactly 3 straight lines which are parallel and exactly 2 circles which are concentric, and 3 straight lines are not making any intersection point whatsoever and 2 circles are not intersecting whatsoever. Okay, that is the scenario. So how many total intersection points will be there? Rest everything remains exactly same. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं लाइन एंड लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स. So 7C2 would have been total number of pairs, but in this case 3 lines are parallel. So any pair made out of these 3 straight lines will give us actually 0 intersection points, but हमने इनके लिए points count किए हैं तो ये केस हमें subtract करने पड़ेंगे. So 7C2 minus 3C2 will be actual number of lines that are intersecting. In each case number of intersection points are equal to 1 into 1 plus circle in a circle. So total cases we considered 5C2, but 2 of these are concentric, तो minus 2C2 करोगे. And in each case number of intersection points are equal to 2, so 5C2 minus 2C2 multiplied by 2. That will be our cases for circle and circle. Third scenario is of line and circle. तो लाइन और सर्कल पे तो एडिशनल कोई कंडीशन नहीं है, वहां पे एग्जैक्टली सेम वैल्यू रहेगा हमारा 7C1 into 5C1 into 2. दिस इज 7C2 यानी 21 minus 3 that is 18 into 1, तो 18 ही आ जाएगा, प्लस 5C2 यानी 10 minus 1 9 into 2 again 18 वैल्यू आएगा, प्लस 70. 70 plus 36 which is 106 will be our answer in the new case. Okay, ठीक है. या ऑलरेडी हमने पीछे वैल्यू निकाला हुआ था, तो बस रिमेनिंग जो एडिशनल वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया था उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये 3 लाइंस आर पैरेलल, 3C2 वेज से 3C2 into 1 intersection point in each case in case of a line plus 2C2 cases for 2 concentric circles multiplied by 2 intersection points in each case. तो टोटल 5 एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, तो बस 5 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर देते. बट ये तो तब है जबकि हमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, अदरवाइज स्टेट में पूरा क्वेश्चन हमें करना पड़ता अगर वैल्यूज डिफरेंट होती तो. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next one is find the maximum number of distinct points of intersection of 5 triangles. So in case of triangles, how many intersection points can be there in case of 2 triangles? So if you have 2 triangles, again similar scenario can be there, that there are 2 triangles which are not touching each other. In this case, 0 intersection points, or 1 triangle inside another triangle. So in that case, 0 intersection points. Or there might be 1 common point, in which case there will be exactly 1 point. Or they might be intersecting in this manner, in which case we'll be having 2 intersection points. Okay? Or there can be more, but most intersection points will be there when we have a star-like figure. In such a case, we have total 6 intersection points. 6 intersection points, which is the maximum value. And since 6 intersection points at the max can be in case of pair of triangles, total triangles are 5, हमें चाहिए maximum value, तो 5C2 will be total pairs of triangles multiplied by 6. That will be our answer, which is equal to 60 points maximum. हर केस में 60 नहीं बनेंगे, that is the maximum value, maximum possible value in this case. Okay, clear है बात? Next question. If 12 distinct points are placed on a circle and all the chords connecting these points are drawn, at how many maximum points inside the circle do the chords intersect? 12 distinct points are placed on a circle and all the chords connecting these points are drawn. At how many maximum points inside the circle do the chords intersect? If there are points inside the circle, ठीक है, तो we know for sure that no 3 points will be collinear. ये तो पक्का पता है. No 3 points are collinear because all points are on the circumference of the circle. ठीक है, वन वे टू थिंक यहाँ पे कि एरर हो सकता है, बट ऐसा सोच सकते हो एरर हो सकता है कि एरर होगा ही होगा, बट इफ यू टेक ऑल द पेयर्स 12C2, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कनेक्टिंग दीज 12 पॉइंट्स विल बी 12C2. तुमने दो पॉइंट्स के टोटल पेयर्स लिए 12C2, सो दिस विल बी नंबर ऑफ लाइंस, इजंट इट सो? और फिर हमें चाहिए विच इज इक्वल टू 12C2 क्या आएगा, 12 into 11/2 यानी कि 66. नाउ यू कैन थिंक कि सिंस इन एनी केस 2 लाइंस आर मेकिंग 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, जो अभी तक हमने देखा है बार बार, ठीक है, तो अगर हम पेयर्स ले लें 66 लाइंस के, तो 66C2 विल बी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1. दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. बट विल दैट बी करेक्ट और रॉन्ग? क्या ही करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? एक बार फिर से सोचो, क्या ट्रैप हो सकता है इस क्वेश्चन में? दिस आंसर विल बी डेफिनेटली रॉन्ग.
डेफिनेटली रॉन्ग। और क्यों रॉन्ग होगा? लेट अस से वी टेक some random 4 points. Okay, some random 4 points. तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी? 4c2 विच इज इक्वल टू 6। 6 लाइंस ड्रॉ होंगी, 1 2 3 4 5 and last 6. Total 6 lines will be drawn. So number of intersection points as per our calculation will be 62, which should be equal to 15. But क्या ये केस बन रहा है यहाँ पे? क्या ऐसा केस हो रहा है? 62 is equal to 15. क्या 15 वैल्यू आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? Because there is a problem. That for example, take this point, point A. From point A, we can see that there are exactly 3 lines emanating for the remaining 3 points. Total points हमने 4 लिए थे, तो 3 lines are emanating and all these 3 lines are intersecting at point A. पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग में जो हमने पॉइंट लिया था. सेम स्टोरी फॉर पॉइंट बी, सेम फॉर दिस थर्ड पॉइंट, लेट अस से पॉइंट सी, एंड सेम फॉर दिस फोर्थ पॉइंट, पॉइंट डी. Isn't it so? As such, if you observe, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें कितने मिल रहे हैं? बिकॉज इफ दे आर ऑन अ सर्कल, on periphery of a circle, so the only intersection point that we are getting is this one. यही हमारे काम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, बाकी तो सब कुछ फालतू है. 15 तो आया भी नहीं है, 15 तो आया भी नहीं है. बट यस, इफ वी एक्सटेंड दीज कॉर्ड्स आउटसाइड, तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट और मिल जाएगा. एंड इफ यू एक्सटेंड दीज टू, तो यहाँ भी हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. So yes, there will be 2 more extra points, 2 additional points outside the circle. But inside the circle, there will be exactly 1 intersection point. क्या ये बात appreciate कर पा रहे हो? And there are 4 points on the circumference of the circle that are original points, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स लिए थे. बेसिकली ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है कि हमने टोटल कैलकुलेशन किया 6c2 फॉर ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स पॉसिबल. बट ये पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट देयर आर 3 लाइंस एमिनेटिंग. तो उन 3 लाइन से हमें जो ओरिजिनल पॉइंट्स है वही तो मिल रहा है. जो ओरिजिनल पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था जिन 4 पॉइंट से, वही पॉइंट मिल रहा है. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन केसेस को, बिकॉज दीज आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है. सो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने केसेस बनेंगे ऐसे? फॉर वन पॉइंट, लेट अस से पॉइंट ए, 3 लाइंस आर emanating from it. So any pair out of these 3 will be giving us a wrong point, because that point is not lying inside the circle or outside the circle. That is already counted, already the point जहां से हमने स्टार्ट किया था. तो 3c2 फॉर एवरी पर्टिकुलर पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे. ठीक है. अब अगर इन पॉइंट्स को हमें काउंट करना होता तो हम +1 भी करते. ठीक है, यानी कि +4 भी करते. बेसिकली उस केस में हम 3c2 -1 करते, बिकॉज एक पॉइंट तो है, तो वहाँ पे हम -1 कर देते. बट सिंस इस केस में हमें, इन प्रेजेंट केस हमें चाहिए पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर इसको जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 15 -12 विच इज इक्वल टू 3. Now this 3 is coming out because of one point that is inside the circle and 2 points which are outside the circle. 2 points which are outside the circle, which will be intersection points of extended chords, और basically seconds के intersection points होंगे. क्या ये क्लियर है? बिकॉज chords तो हमारी inside the circle ही intersect करेंगी. Isn't it so? ठीक है. और they might be emanating from the same common point, which are A, B, C, D in this case, or 12 intersection points in case of our original question. क्या ये क्लियर है? ठीक है. सो अब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर आवर ओरिजिनल क्वेश्चन. बट उससे पहले एक और बात को जनरलाइज कर लें कि अगर हम ऑब्जर्व करें, सो बेसिकली दिस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इन एवरी केस सिंस नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर हम 4 पॉइंट्स को चूज करें, सो इन ऑल सच केसेस इफ वी चूज एनी 4 पॉइंट्स, सो दोज 4 पॉइंट्स विल बी मेकिंग वन क्वाड्रिलेटरल. They will always be making one quadrilateral, not just quadrilateral but a cyclic quadrilateral. तो हमारे लिए उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, बट this will be a cyclic quadrilateral, and if that is a quadrilateral, there will be exactly 2 diagonals of that quadrilateral, and those 2 diagonals will be intersecting in all cases, and there will be precisely one intersection point. So there will be a quadrilateral, and hence there will be one intersection point exactly. Okay, and that will be intersection point of diagonals. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है.
सो स्ट्रेट अवे वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं, 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, वी कैन फॉर्म पेयर्स ऑफ 4 पॉइंट्स. बेसिकली out of 12 points, how many selections of 4 points can be done? So that will be 12C4. This will be number of quadrilaterals formed. And every quadrilateral will give us one intersection point of diagonals. So multiplied by 1. This will be our answer. 12C4 into 1. This will be total number of intersection points maximum. This is the maximum value. इससे छोटी वैल्यू भी आ सकती है. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि we can have two quadrilaterals जिनके डायगोनल सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज देयर माइट ऑल्सो बी अनदर क्वाड्रिलेटरल, लेट अस से, ठीक है, with the same points of intersection, same point. So that is also possible, but maximum value will be 12C4 into 1. So this will be our answer, which is equal to 12 into 11 into 10 into 9 divided by 24. So 11 into 9, that is 99 into 1 second. 5 आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया. So that will be 495. 495 points maximum can be there. These points are inside the quadrilateral, yeah, inside the circle. ठीक है, all these points are inside the circle. In each quadrilateral we'll be getting one point of intersection of the chords that is inside the circle. but अगर chords को extend भी करते हैं, ठीक है, अगर हम chords और sides दोनों को ही extend करते हैं, because इन सम कॉर्ड्स और साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स को भी एक्सटेंड करें, और जो कॉर्ड्स इनसाइड है इनको भी एक्सटेंड करें, साइड्स भी अल्टीमेटली कॉर्ड्स ही हैं, तो सारी की सारी कॉर्ड्स को इफ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड, इन दैट केस विल ऑल्सो बी गेटिंग सम पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल. दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, बिकॉज इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी गेटिंग वन point inside the quadrilateral and there will be 2 points outside, unless the lines are parallel, unless that is a square or a parallelogram or a rectangle. In that case there will be no intersection point outside the circle. But if that is not the case, then we'll also be getting 2 intersection points outside. Maximum value हमारा 2 रहेगा, 2 outside for each 4 points, यानी कि 12C4 into 2 will be intersection point of extended chords outside the circle. Extended chords outside circle. और अगर हमें इन 12 पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होगा तो 12 को एडिशनली ऐड कर देंगे. सो अवर एक्चुअल आंसर ऑफ टोटल पॉइंट्स इफ ऑल सच लाइंस मेड आउट ऑफ दीज chords are extended, so that will be 12C4 into 3 plus 12. बट ये नंबर आएगा कि अगर हमें जब हम एक्सटेंड करेंगे सारी की सारी कॉर्ड्स को और उससे जो पॉइंट्स मिलेंगे. हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा 495, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ this particular question. 12 distinct points are placed on a circle. Maximum points inside a circle at which the chords will be intersecting, that will be 495 only. No other value will be there. Is that perfectly clear? ठीक है. So next question. Next one is all the diagonals are joined in a convex nonagon. Nonagon यानी कि 9-sided polygon. So 9-sided polygon is there and all the diagonals are joined in a convex nonagon. So find the maximum number of intersection points of diagonal. Maximum number of intersection points of diagonal. So can you comment about the answer to this question? What should be the answer? Now, simple hint that I'll be giving is that this is similar to previous question. Similar to previous question. Language different hai. This is similar to previous question. Answer in the comments what will be the answer of this question. Okay. एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं in this session. That is 8 identical balls are to be placed in the squares as shown in the figure such that one row contains 6 balls and one contains 2 balls. 8 identical balls are to be placed in the squares as shown such that one row contains 6 balls. So obviously since rows are always horizontal and columns are always vertical unless otherwise mentioned. Okay, so rows are always horizontal, columns are always vertical. So in this case we are having 6 rows in total. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5 and row 6, and only row 3 and row 4 are there which can contain 6 balls. Okay, if one square is containing exactly one ball, so in that case only row 3 or row 4 can be there which can contain 6 balls. Okay, for any other row we can have at max 2 balls. और given ये है हमें कि one row will be containing 6 balls and one row will be containing 2 balls.
To find maximum number of ways this can be done. So what will be maximum number of ways in which this can be done? The first thing that we need to do is select one row for 6 balls. Selection of row with 6 balls. So since there are only 2 such rows in which we can put up 6 balls, so 2C1 should be the ways. Now we have to select the second row which will be containing 2 balls. ठीक है, but ध्यान ये देना, for example row 4 has been selected. For example row 4 has been selected. तो जैसे हमने रो 4 को सेलेक्ट कर दिया, नाउ वी हैव 5 रोज रिमेनिंग. रो 3 को भूल नहीं जाना है. इवन इफ दैट हैज टोटल 6 ब्लॉक्स, रो 3 कैन आल्सो हैव 2 balls. ठीक है, that can also contain lesser balls than 6, so that is also possible. So we have total 5 rows out of which we have to select exactly one. So into 5C1, in 5C1 ways we can select the row to put 2 balls. ठीक है, बट यहाँ पे 2 केसेस बनने वाले हैं. वो 2 केसेस क्या बनेंगे? वन केस कुड बी दैट रो 1, रो 2, रो 5 और रो 6 इज सेलेक्टेड. इन 4 रोज में से कोई एक सेलेक्ट हुआ, ये एक पॉसिबल केस हो सकता है. और रो 3 गेट सेलेक्टेड, या फिर रो 3 सेलेक्ट हो जाए. इजंट इट सो? ठीक है, अच्छा 5C1 ना लिख के 4C1 प्लस एक वाला केस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 5C1 में प्रॉब्लम हो जाएगा. 5C1 शुड नॉट बी. बेटर वे होगा हमारा, 4 केसेस होंगे. 4C1 वेज में वी कैन सेलेक्ट रो विद 2 blocks. ठीक है, और इन ईच केस सिंस there are exactly 2 blocks, so there is only one way to put these 2 balls. Exactly one way. So 4C1 into 2C2 or exactly one. Plus second case is when you are selecting row with 6 balls, 6 blocks. और 6 blocks वाली रो को सेलेक्ट किया, so in that case we have to put only 2 balls. So यानी कि 6 blocks में से we have to choose 2 blocks. So 1C1 में we can select that row and then we have to select 2 blocks only out of 6. So 1C1 into 6C2. This will be our final answer. 2C1 is equal to 2, or 4C1 into 2C2, that is equal to 4, plus 1C1 into 6C2 is equal to 15. So 2 into 4 plus 15, that is equal to 38 should be the answer for this question. 38 हमारा आंसर हो जाएगा. Option A will be the answer. Is that clear? Okay. So that should be all in this session. And I believe जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा. If there is any doubt whatsoever, then make sure to comment about that out. And if you like this session, then make sure to hit the like button as well. ठीक है, कोई भी डाउट है तो make sure to comment about that doubt with timestamp. At this timestamp you got the doubt. Okay, that's all. Bye bye. Take care and keep learning. And if you've liked this session and you're liking the content, then also spread the word. Also share about these sessions with your friends and subscribe to the channel as well. You can also join the Telegram channel Mathological, or can message me on Telegram at ADITYKT for any questions or queries regarding your preparation. Bye bye. Take care and keep learning.